वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अपने आप को टेक्निकली कितना आगे लेके जा सकता हूँ। सो मैं आपसे अगर कहता हूँ ना कि अच्छा आप एक पेपर पकड़ो, पीस ऑफ पेपर पकड़ो और उसके ऊपर मुझे आप कोई चीज़ डिज़ाइन करके दो फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा यार यही चीज़ जो है ना पकड़ के इसको ना मुझे अब आप ना एक 3D स्पेस के अंदर मुझे ना सेट करो। टिपिकली इन अ रेंडरिंग इन अ विजुअलाइजेशन जॉब, what you are looking to do is you're looking to give beautiful images. In 3D, the whole canvas, the whole 3D space is the thing. You know, हम design जब भी करते हैं तो we are always looking for composition. I am not a coder, ठीक है? But I have written code off of ChatGPT which works. जो भी AI के थ्रू चीज़ content बन के निकलता है, उसमें आपकी reflection होती है. Assalamu alaikum everyone. I am Wasif Hussain and then I welcome you again to another episode of Tangent, the design series, जिसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ डिज़ाइन प्रोफेशनल्स को बुलाएं और ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरीके से डिज़ाइन की प्रैक्टिस हो रही है. एंड टुडे वी हैव समवन हु इज़ वर्किंग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट टूल्स, एंड जो ये सारा नया AR and VR की चीज़ें हो रही हैं, इवन AI as well. So he is working in different projects, you know, he's working creating different solutions. But थोड़ा सा उनसे खुद भी पूछते हैं कि वो क्या चीज़ें किस किस्म की कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम बिलाल. अस्सलाम वालेकुम वासिफ. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. मैं ज़्यादा टेक्निकल इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो मेरी वहाँ से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं बिलाल भी छोड़ता हूँ, देन यू नो मे बी बिलाल. बट आई कैन डू ऐड के जो बिलाल हैं वो फाउंडर भी हैं, CTO भी हैं of Exarta, which is again an AR and VR solution providing company. But then Bilal is also, you know, co-founder and CEO for Renderlounge. इतना तक तो मैं बिलाल बता सकता हूँ. इसके आगे वो क्या कंपनीज करती हैं, I would need your help. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. सो जिस तरह आपने बताया, आई एम द फाउंडर एट रेंडरलाउंज. सही. और मैं दोनों को ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सही है. सो रेंडरलाउंज जो है वो बेसिकली विजुअलाइजेशन और रेंडरिंग सर्विसेज एंड एडवांस सिमुलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, जिसके अंदर हम रियल एस्टेट सेक्टर से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज एंड उसके अलावा डिफरेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस हो गए, तो उनसे रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी डेवलप करते हैं. Exarta जो है, इट्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म. वी आर मेकिंग यूज ऑफ we are making use of artificial intelligence within this, and we are providing limited services to select clients, but also the main focus is on our products. Okay. So that's a brief introduction. Okay, great. Thank you so much. इसके अंदर हम और भी डेफिनेटली फर्दर डिटेल्स में जाएंगे, बट उससे पहले हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा ना वी ट्राई टू ट्रेस डाउन द करियर पाथ और द ओरिजिन्स ऑफ द पर्सन दैट वी इनवाइट. तो बिलाल मुझे ये बताएं कि how did you end up, you know, in this domain, और जो चीज़ें आप आज कर रहे हैं कहाँ से शुरू हुई थी और वो क्या स्टार्ट था? Basically now जिस अब हम सेक्टर के अंदर हैं, that is IT essentially, but I started off with a very different career, and I have a degree in mechanical engineering. Okay. ठीक है. So I did my master's in the UK in mechanical engineering design, again very core and very focused on engineering. So then I came back straight away. I had a very clear vision that you know, I need to come back to the country and serve the country in whatever way and form I can. So I came back and I took up an opportunity at a company in Lahore called AE Design. Again, I want to highlight something here which is very important for, you know, prospective people who want to join the industry, is that the package that I joined up on was nothing, you know, compared to what was being offered in the market. But what I saw at that point was that, you know, how this can actually help me, this career can actually help me with my skills. एंड मैं अपने आप को टेक्निकली कितना आगे लेके जा सकता हूँ. सही है. सो मनी एट दैट पॉइंट वाज नेवर ए कंसर्न फॉर मी. ओके. ठीक है. सो आई वुड लाइक, यू नो, एवरीबॉडी टू सॉर्ट मेक नोट ऑफ दिस इज दैट, यू नो, आपके स्टार्ट ऑफ द करियर के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, एंड आपका जो करियर पाथ बनेगा वो उसी की बेसिस के ऊपर बनेगा. सही है. सो एनीवेज, सो आई जॉइन दिस कंपनी. And turns out that this company is an amazing company which is, you know, providing engineering solutions to
the likes of Porsche to the likes of Audi. Really? Yeah. Okay. So we were essentially working with all sorts of automotive companies in Okay. Europe. We were working with industrial companies as well, where we were offering engineering solutions. And by the way, this is very important, is that we were not some back-end team, working on some back-end stuff, right? Okay. This was purely engineering stuff. We were giving recommendations on design, on engineering, on design improvements. Whoa. Can you imagine? No. Like, we were recommending German companies on how to improve their products. Wow. And this is based out of Lahore. This is based out of Lahore. Wow. So an amazing company, amazing experience. I think a lot of, where I am today, whatever little I've done, I owe a lot to, what I was able to learn in that company and the culture, that company provided. Okay. So that's how I started. And then after giving it 3 years, I guess I wanted to sort of switch to a solo mode in the sense, because, now the expectations of me in that company were to be more on the managerial side, but I felt that, 3 years is nothing. I've just started my design career. So you wanted to learn more, you wanted to explore more. I wanted to explore more, learn more, implement the skills that I've learned. So what I did was close that chapter there and started looking for, I was looking for other opportunities within the design segment, but there wasn't really much there. So what I felt for, if there's nothing there, then, someone needs to create that. Okay. So I started my own, a solo product development studio. और उसके अंदर जो था, मैंने फिर physical products जो थे, सही, industrial design से लेके उनके engineering से लेके, I started building those products for different clients, ठीक है, freelancing platforms के ऊपर. So that's how I sort of my entrepreneurial journey started. सही. Which was again, the drive was design at the end of the day. It was, for me, the opportunity wasn't there. I wanted to create that opportunity कि मैं सबसे पहले तो ये तक खुद कर सकूं. हाँ. So then I started working with these companies. So I created around 22 different products for my clients. Oh, yeah. Okay. But then at that point, I realized I was like a good 2 to 3 years into it, and I realized that I was not able to scale this up, right? Because one of the hurdles that I would face was that a lot of these companies were from US, ठीक है, और उनको ये होता था कि product development cycle जो है, it does not end just with the design, right? So the whole development cycle is, it's design, then it's prototyping, then it's the mass scale manufacturing. So the company or the person who's designing it is involved in all of this, because that person understands exactly what the product needs to be. And sometimes it comes back, at the prototype stage, it comes back into the designing phase as well. Exactly. Until it gets, that's all part of the process, approved, and then goes. Exactly. Yeah. But so what was happening was that I was getting cut off after the prototyping stage. Oh, okay. So that I wasn't getting the full kick out of the whole thing. Mm-hmm. And plus from a financial aspect as well, it was limited in that sense that while I was giving this service, it was fine, but then I had to look for the next product that I need to work on, right? So वो जो एक recurring चीज थी ना, that wasn't happening, because मैं एक ऐसे point पे cut off हो रहा था कि जिसके बाद वो recurring काम सारा आपका चलना शुरू होता है. That was the point I realized कि if I am to stay in Pakistan, ठीक है, which was always my primary concern, कि that was the paramount thing कि जिसकी basis पे मैंने अपने सारे decisions लिए career के, ठीक है. So I realized कि अच्छा यार ये नहीं तो फिर then let's see what I can actually switch into, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अपने skill set और जो design है उसको मैं कहीं implement कर सकूं which works for Pakistan, so that I have clientele, I have recurring sort of thing going, so that I can actually scale this up as well. Okay. And this was a very tough time because I had just recently got married, ठीक है. Okay. And मैं अपना ये काम भी मैंने छोड़ा उस वक्त, ठीक है. So and ये मैंने देखा कि इस तरह के inflection point ना आपके पास आते हैं, ठीक है. So you need to sort of buck up, अपने आप को करना पड़ता है आपको, and then you sort of, I guess you need to have the family support and the spouse, that kind of a support जो कि आपको आगे लेके जा सकता है. So your success will always be determined by the people around you. Another important thing to note from my experience. So you're lucky in that sense, like the people around you, I'm they blessed. were supportive of, what you were trying to do in this next stage Exactly. of your career. Exactly. Okay. So that's when I
made the jump, and the segment that I sort of understood could work was the architecture and architecture side of things, right? Okay. Designing architecture. So I could implement a lot of what I had already learned, the skills that I had into that. Okay. But I was not an architect, so I couldn't be an architect. So the second best thing was to actually go into the design side where you're visualizing and rendering. And at that time, there were some engines. So typically we use engines for real-time or through real-time rendering. So real-time rendering was a new thing. Okay. Nobody in Pakistan, not even in the entire region, was talking about it then. So what I felt was that if I am to jump into this field, मैं compete नहीं कर पाऊंगा बाकी सबके साथ जो कि मतलब चीते बैठे हुए हैं पिछले 10-15 सालों से, ठीक है. So I had to find out some niche in this sort of whole thing where जिसको मैं करके and I can actually go run with that. सही. And that was real time. Typically rendering के अंदर ये होता है कि you sort of create your scene, you have this interior, right? So you create this interior and then you render it out. Back in the days, the rendering would take like, anything from 15 minutes to 20 minutes, 30 minutes to 3 hours to render out a single scene. और ये real time technology जो थी, this was like कि यार आप जो है ना एक सेकंड के अंदर जो है वो 30 फ्रेम्स 60 फ्रेम्स आप एक सेकंड के अंदर रेंडर कर रहे हैं. Okay. This is really fast. This is really fast because the technology behind it was gaming technology. Okay. जिस तरह से गेमें बनती थी, so there's an engine called Unreal Engine, ठीक है. So what they did was कि इन्होंने ये गेमिंग इंजन जो था ना ओपन कर दिया पब्लिक के लिए कि कोई भी आए अपनी गेमें बनाए. पहले ट्रेडिशनली होता ये था कि सारे स्टूडियोज के पास ये इंजन होते थे अपने, मगर ये वो अपनी प्रोप्राइटरी आईपी अपने पास रखते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, एंड दे वुड मेक गेम्स आउट ऑफ गेम्स, राइट. और वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आप लोग लेते हो? सो नहीं. So when Epic जो Unreal Engine को own करते हैं, so when they did that, they opened it up to the market, ठीक है, and then they opened it up for free. Wow. जिसने आना है बनाओ, जो बना सकते हो. ठीक है. And then free hand है सबके पास. हाँ. And the rendering quality of it was actually better than any other engine out there, right? And it was close to, it was not there, but it was close to something that we would render out for, our architectural things. ठीक है. So I felt कि यार this is something. So अब आता तो था नहीं. Then I jumped onto YouTube. ठीक है. That was the only way to go forward. Okay. And I started learning. सही. So essentially, I learned the skills and started rolling out products. उसकी डिटेल में नहीं जाता कि किस तरह फेलियर्स आते हैं, किस तरह वो. I guess anyone who's in a business or who's even freelancing understands this. I think अब बहुत बड़ी population इस चीज़ को समझ चुकी है. So मैं उस पर बात नहीं करता था. मगर वो as anybody would face it, I faced similar issues. ठीक है. But then, I persisted with it, and typically, then I was able to sort of push an entire new niche into the market, which was this, real-time walkthrough. कि अब आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बिल्डिंग पूरी देख रहे हैं, fully rendered. And you were a single person company at this time? I was, I wouldn't call myself single, so मैं single ही था, but I had my better half with me, who would support me in this. So, sure. So yeah, I think it would be injustice कि अगर मैं वो mention ना करूँ. सही. So two people company. Two people company. सही. So yeah, so this is how I jumped into this particular field, and then from here on in, everything started to connect. सही. तो उसका वो scale up होता रहा. So yeah, so I was able to scale this up, this one, and then Exarta, was a company that I founded with my co-founders. So by that time, as I already mentioned, that this was actually a gaming engine. So जब जो हमें जिस तरह से होता है कि यार अच्छा अब चीज़ें जब सीखने में लगते हैं तो फिर then eventually I also sort of understood how to develop games. Oh, so you know how to make games as well. Yes. ठीक है. So वो भी चीज़ समझ में आ गई. तो then ये metaverse वाला जो था concept उस वक्त तक इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं थी. सही. ठीक है. So at that time there were few clients जिनके साथ बहुत अच्छा एक relationship बन गया, and very honest, very good people. वो बस जब आपकी तारें connect होनी होती हैं तो वो connect होती हैं. ठीक है. So वो तारें connect हुई in the sense के I was building a solution for industrial segment, for which I also happened to get the Epic Mega Grant, which is a big thing. ठीक है, जो कि
जो कि वो बहुत हर प्रोजेक्ट को बड़ी निटिग्रिटी में डिटेल में देख के एंड देन दे सॉर्ट ऑफ बैक दैट प्रोजेक्ट. So able to get that. So you're working on this industrial solution, and at the same time, I was talking to these clients of mine, and they were like, "Oh, we tried to do this like 5-6 years ago. In the concept was a virtual mall, a metaverse mall, and we were like, I already liked the people. I guess they already liked me, so it was a natural connection, and so I guess it was done very quickly as well. So the three of us, and my now co-founders Rashid and Qasim and myself, so we decided that we need to grab this opportunity. It's a big opportunity, and hence Exarta, Exarta game, the metaverse platform. the platform. Amazing. I think you have been very cognitive, but perceptive of the changes which were happening in your career. You were seeing things, experiencing things, but अब मुझे लग रहा है कि 2-3 साल बाद का वो जिस एक ट्रांजिशन आ रही है, you were thinking कि ऐसा यार ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, वर्कआउट नहीं हो रही, तो then I need to move towards this. I think this is very very remarkable कि वो बाकी भी लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं. बट मैं दोबारा से थोड़ा सा पीछे लेकर आऊँगा. You studied in UK, you specialize over there. So वो जो एक एक्सपीरियंस है coming back and वो एडजस्टमेंट वाला जो टाइम है कि you come back and you also wanted to work here and contribute here, but वो adjustment period कैसा था यहाँ पर? It was it was difficult in the sense that it wasn't the case कि मैं वापस आया और मुझे नौकरी मिल गई. सही है. So उस टाइम पे जो था ना लिंक्डइन होता था, ना इस तरह का कोई सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था. सही है. कि आप अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, हाउ यू वुड अप्लाई फॉर अ जॉब एटसेट्रा, राइट. बट उस टाइम पे आई वाज सेंडिंग आउट लेटर्स, कवर लेटर्स टू डिफरेंट कंपनीज इन लाहौर. 90% ऑफ दोज वुड कम बैक टू मी कि जी एड्रेस ही नहीं है, या एड्रेस गलत है, या एड्रेस चेंज हो चुका हुआ है. सो एनीवेज, सो आई गॉट दिस फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड उस वक्त आई डिडंट सी कि यार अच्छा व्हाट दे वर ऑफरिंग मी और व्हाट दे वर नॉट ऑफरिंग मी. आई नेवर नेगोशिएटेड. सही है. I was like, yeah, it seems like a good opportunity, and just went for it. So that was it. नहीं, that's really really nice. बिलाल, जो अगेन हमारा जो इसका पॉडकास्ट का एक और वही जो कोशिश वही है कि वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिज़ाइन किस तरीके से पाकिस्तान में वो हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है. एंड आई रिमेंबर आवर फर्स्ट इंटरेक्शन 7-8 years ago was when you were designing some products. वही वाला जो फेस था, you were giving consultancies like that. तो एक तो वो मुझे याद है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे थे आप, बट उसके अलावा भी मुझे बताएं कि क्या अभी भी डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हैं किसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस में, अपने काम में? अभी जैसा आप AR VR की चीज़ें कर रहे हैं, या रेंडर लाउंज वाला जो प्रोजेक्ट है, इज डिज़ाइन स्टिल यूजफुल फॉर यू? एब्सोल्युटली. आई मीन डिज़ाइन इज़ समथिंग आई वुड से कि मैं इससे भी नीचे लेवल पे आ जाता हूँ. डिज़ाइन आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो यू आर यूजिंग डिज़ाइन. इवन इफ़ यू राइटिंग कंटेंट, तो आप डिज़ाइन कर रहे हैं कंटेंट. सही है. तो इन द एसेंस ऑफ द वर्ड ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज यूजिंग हिज क्रिएटिव एबिलिटीज टू बिल्ड एनीथिंग एट ऑल इज डिज़ाइन. ओके, सही है. मेक सेंस. एट वेरी कोर हम सब एट वेरी कोर. बट जिस लेवल पे आप पूछ रहे हो, सो यस, वी आर हेविली engrossed in such activities. And in fact, that's our day to day basically. सही है. Then tell me a bit about कि जिस तरह ये AR और VR के आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो वो जो वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने का प्रोसेस है, वो कैसा है? एंड इन जनरल भी, बिकॉज आई एम नो इन दैट सेंस कि मुझे नहीं पता कि वो AR VR में क्या चीज़ें हो रही हैं. सो प्लीज़ फर्स्ट मुझे वो बताएं कि वो उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड सेकेंडली मुझे ये भी बताएं कि डिज़ाइन एक्सपीरियंस डिज़ाइन के हिसाब से वो कैसे है virtual reality. I want to draw a comparison. सही. So मैं आपसे अगर कहता हूँ ना कि अच्छा आप एक पेपर पकड़ो, पीस ऑफ पेपर पकड़ो, और उसके ऊपर मुझे आप कोई चीज़ डिज़ाइन करके दो. फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करके दे दो, या कुछ आप एक स्ट्रक्चर बना के दो, व्हाटएवर. अब मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा यार यही चीज़ जो है ना, पकड़ के इसको ना मुझे अब आप ना एक 3D स्पेस के अंदर मुझे ना सेट कर. सो स्ट्रेट अवे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इसमें कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट टू इंक्रीज. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको जो हमने, क्योंकि प्रीवियस हमने कुछ एग्जाम्पल्स एस्टैब्लिश किए हैं कि जिसमें typically in a rendering and a visualization job, what you are looking to do is you're looking to give beautiful images of rooms, of houses. When you're talking about 2D, essentially you're just talking about that frame. उस frame के अंदर जो है वही सब कुछ है, वही सारी दुनिया है.
उसकी साइडों पे अगर आपने कचरा भी रखा हुआ है ना तो इट डजंट मैटर बिकॉज वो फ्रेम के अंदर। इन 3D द होल कैनवस द होल 3D स्पेस इज द थिंग, सो इट मेक्स द जॉब ऑल द मोर डिफिकल्ट और द मोर कॉम्प्लेक्स। सही है। और उसके अंदर एज यू मस्ट नो के हम डिज़ाइन जब भी करते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कॉम्पोजिशन। ओके। आप जितनी मर्जी खूबसूरत चीज़ें बना लें, इफ दे आर नॉट कंपोज्ड वेल एंड इवन अगर आपका कैमरा एंगल आपने सही चूज नहीं किया हुआ तो आप सारी चीज़ का मिस मार देंगे। नाउ इन दिस केस द होल 3D स्पेस इज योर कैनवस। सो अब आपको सिर्फ ये बैलेंस आउट नहीं करना कि अच्छा यार ये पिलर जो है ऊपर से जा रहा था, खूबसूरत लग रहा था कि नहीं लग रहा, अब ये ऊपर जाके किस चीज़ के साथ जोड़ रहा है, इसके साथ ऊपर से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, और आगे से अगर आपने ऊपर बल्ब लगाए हुए हैं या कोई चीज़ लगाई हुई है, नाउ वो अब इसके साथ किस तरह से कंपोजिशन में आ रही है। It's very complex. It's very interconnected. यू कैन से कि इट्स एन आर्किटेक्ट्स ड्रीम, ठीक है, बट ऑल्सो व्हाट यू वुड रिक्वायर ऑफ अ फुल टाइम आर्किटेक्ट से जो आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी शायद उससे थोड़ा सा ऑन स्टीरॉइड्स आप वो चीज़ एक ऑफर करके दें, बिल्कुल ठीक है। which typically in our industry people eventually don't realize कि वो उसको उतनी वैल्यू नहीं देते, मगर there is a lot that goes into it. So it is definitely an architect's dream, but maybe a visualizer's nightmare. कि वो जो जिस तरह कि आपने वो meticulous डिटेल्स की बातें की हैं कि हर चीज़ का एक कनेक्शन होना चाहिए, हर चीज़ आप उसको उस सेंस में देखें कि चाहिए पूरी 3D एक्सपीरियंस है, एंड उसकी फ्रेमिंग एंड एवरीथिंग, लाइटिंग एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट। ये तो हमने थोड़ी सी इस तरह काम की बात की। मुझे ये बताओ बिलाल के फ्री टाइम में, मतलब जब ये चीज़ें नहीं हो रही होती, you're very enterprising, we can see, you've built projects, you've built companies, फ्री टाइम में क्या करते हैं? So free time में basically either it's family or it's just learning more stuff, learning new stuff, getting to know about new stuff, new tech that's coming in. So essentially यही है। मतलब फ्री टाइम में I'm not मैं कोई स्पोर्ट्स एंथुसियस्ट नहीं हूँ, या मैं कोई इवन ट्रैवलिंग का भी इतना बड़ा एंथुसियस्ट नहीं हूँ। सो मेरा टिपिकली यही होता है कि आइदर इट्स फैमिली, बच्चे हैं, फैमिली है, या फिर ये है कि कोई आई एम लुकिंग एट समथिंग न्यू कि जिसको देखा जाए कि अच्छा व्हाट्स कमिंग, एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ के अच्छा जो हमारे करंट टास्क हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा AI को लेके आऊँगा कि जिस हमारे करंट टास्क है उसमें पीपल फियर AI, ठीक है, यार ये हमारी नौकरी लेके जा रहा है, ये हमारी नौकरी लेके जा रहा है, ठीक है, आज ये खत्म हो रहा है, कल वो खत्म हो रहा है। सो हाउ आई लुक एट इट इज के मैं उन सारी टेक्नोलॉजीज को देख रहा हूँ कि हम किस तरह से अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं। सही, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन कि जी AI आपकी नौकरियां लेके जा रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, ठीक है। सो मैं इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज अब आपकी टेक उस साइड पे जा रही है, तो इट इज़ मोर टुवर्ड्स कि हम अपने प्रोसेसेस को किस तरह मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, एंड या दैट्स अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे इस पे और ये भी बताएं कि देखें अभी इसी सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे गेस्ट आए कि जो दे वर ब्रांड मैनेजर्स, दे वर सम पीपल हु वर डूइंग विजुअल मर्चेंडाइजिंग, फिर क्रिएटिव डायरेक्टर्स आए, चीफ डिज़ाइन ऑफिसर्स आए, तो वो डिफरेंट किस्म के हमने डिज़ाइन के वो देखे कि कैसे डिज़ाइन यूटिलाइज हो रहा है। बट देन वी ऑल्सो सॉ दैट सॉर्ट ऑफ की डिज़ाइन की डेवलपमेंट किस तरीके से होती रही है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। देन वी ऑल्सो हैड सम गेस्ट जिन्होंने हमें बताया कि डिजिटल डिज़ाइन आफ्टर 2000s कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ। वी वर टॉकिंग अबाउट 3 waves, जाफर हुसैन थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। बट वट यू डूइंग राइट नाउ विद योर प्रोजेक्ट्स, AI रिलेटेड, प्रॉम्प्ट डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें, AR and VR, this is very very at the edge of innovation or what's happening right now design के अंदर, and I don't know that many people at least in my circle who are exploring such stuff in design. तो what do you think कि वो आने वाला जो भी वक्त है डिज़ाइन का from here, तो ये prompt डिज़ाइन और AI डिज़ाइन, ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी? Absolutely, these things are here to stay. I wouldn't sugarcoat it or say it in any other way. AI is here to stay. We have to realize that. ठीक है, and it's not a bad thing actually. Because देखो जो मैं अभी पिछले से कनेक्ट करता हूँ, जो मैं बात कर रहा था कि people are scared of AI. मतलब literally your technical people are scared of it. आप even पूरा कोड AI से लिख सकते हैं यार। बिल्कुल, yes. I'm not a coder, ठीक है, but I have written code off of ChatGPT which works, ठीक है, सही है, ठीक so है, but that's not the question. The code that I may have generated is not going to be efficient because I don't have that background knowledge,
ठीक है. Any coder who might still use AI to make his task more efficient, मगर उसका code would kill me any day, kill my code any day, right? Definitely. सही है. So same goes for design as well. आपका unless you have a design, आपका अगर you don't have experience in design or in a particular field, ठीक है, आप prompt engineering कैसे करोगे? How would you do prompt engineering? ठीक है, आप अच्छी और accurate prompt engineering की जिससे आप कुछ useful data निकाल सको या useful images निकाल सको, ठीक है, वो उसी वक्त होगा when you understand your space, even not only better but the best. बिल्कुल ठीक है. तो then you'll be able to generate stuff के जो कि आप actually utilize कर सकते हो. Because I can give you an example. Now हमारा visualization का है तो I'm continuously looking at कि अच्छा यार AI से हम किस तरह से अपने task को मतलब हमारा time कम कर सकते हैं. Maybe शायद AI से हम पूरे renders किस तरह निकाल सकते हैं. सही. Right? देखो. So we don't think of it as cheating because there are a lot of people who have come to मतलब जिनके साथ मैंने interact किया है वो AI को touch नहीं करते because they say कि यार नहीं this is cheating. ठीक है. How is that cheating? Because जब तक ये 3D rendering technology नहीं थी उससे पहले क्या था, लोग sketches बना के उसके अंदर कलर भरा करते थे. तो जब 3D आपका आया rendering तो then that was cheating. so one has to be you have to be proactive, you have to be realistic about these things कि नहीं यार this is not it. आपका जो भी AI के थ्रू चीज़ कंटेंट बन के निकलता है उसमें आपकी रिफ्लेक्शन होती है. If you have no depth in a particular field और आप उस पर AI से भी कंटेंट निकाल रहे हो ना, अगला बंदा पढ़ के उसको रियलाइज कर लेगा जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार दिस गाय नोज नथिंग अबाउट व्हाट इज टॉक. और वही बंदा जो कि नॉलेज बेस लेके आ रहा है अपने साथ वो बेशक AI से जनरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर डेप्थ डालेगा, वो AI को बताएगा. यू हैव टू ट्रेन AI. मतलब ऑल्दो AI इज ट्रेन, मगर इवन लेट्स से चैट जीपीटी आजकल हर कोई यूज़ करता है. चैट जीपीटी को अगर आप सही तरीके से नहीं समझाओगे ना तो चैट जीपीटी आपको लिटरली if you give chat gpt a prompt, if I give chat gpt a prompt, it will almost give you a similar kind of a thing. आपको वो similar content ही generate करके देगा. और शायद ये ऐसे भी तो है ना बिलाल के देखें वही चाहे कंप्यूटर है या पेन है तो वो उसके ऑपरेटर के ऊपर है कि उसको किस तरीके से यूज़ करता है. यू माइट बी अमेजिंग एट ड्राइंग एंड आई माइट बी डूइंग रियली बैड ड्राइंग्स बट इट्स द सेम पेन. सो अगर वो टूल है, चैट जीपीटी है, AI है या जो भी प्रॉम्प्ट डिज़ाइन की चीज़ें हम बातें कर रहे हैं, चलाने वाले पे भी तो एग्जैक्टली नहीं, आई टोटली एग्री विद यू. बल्कि इनफैक्ट इसमें लोगों को ये देखना चाहिए, इफ़ यूर अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर या लेट्स से आप कहते हो कि मैं गुड कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है, यू डोंट हैव द स्किल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू डोंट हैव द स्किल्स ऑफ कि मैं सिनेमाटोग्राफी किस तरह से करूँ, ठीक है. अब आपके बाय द वे टूल्स ऐसे भी आ रहे हैं जिससे आप AI की वीडियो पूरी जनरेट कर सकते हैं, राइट. सो नाउ अगर आप इसको प्रोएक्टिवली सोच रहे हैं, वो ग्लास हाफ फुल वाली बात है ना, ठीक है ना, या ग्लास हाफ एम्प्टी वाली बात है, ठीक है. तो अगर आप ग्लास हाफ फुल देख रहे हो तो फिर आप देखोगे यार ये दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि मैं पूरा ग्लास भर लूँ, विच प्रीवियसली यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू. आपके पास पैसे नहीं है यार करने के लिए. यू कैन नॉट पे द ग्राफिक डिजाइनर और द 3D मॉडलर और द 3D डिजाइनर कि आप वो कर सको. नाउ यू हैव द आइडिया, आपके पास अपना कॉन्टेंट है, ठीक है, एंड द रेस्ट वो जो गैप है वो आप ऐसे फिल कर लो. अगर इस तरह से हम सोचें तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा. जो ग्राफिक वाला है वो अपने आप को दूसरा एंड को फिल करके एट द एंड ऑफ द डे देखे ना, आप मोस्टली 90% ऑफ द चीज़ जो मार्केट में जा रही है वो तो कंटेंट ही बिक रहा है ना यार. सो और वही कि जैसे अगर जो आपने शुरू में जो बात की ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि इट्स हेयर टू स्टे, लेट्स बी प्रैग्मेटिक अबाउट इट, कि इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक. जैसे न्यूज़पेपर थे उनसे पहले शायद वो हाथ न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, उससे पहले शायद कुछ लोग हाथ से लेके चीज़ें स्प्रेड किया करते थे. फिर न्यूज़पेपर्स आया, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया. अब शायद न्यूज़पेपर भी कुछ अर्से पहले देर डेड नाउ ऑलमोस्ट, कि अब वो लोग जो हैं प्रिंटेड फॉर्म नहीं लेते, ऑनलाइन जाते. अब इवन शायद ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी जो हैं वो भी शायद दे आर हैविंग टफ टाइम बिकॉज ऑफ टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम के लोग इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट डिफरेंट तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं. सो जब वो टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांसमेंट के साथ चीज़ें आप देख रहे हैं कि वो इवॉल्व हो रही हैं, सो सेम गोज फॉर मे बी AI एंड AR एंड VR उस तरह की चीज़ें कि दे आर हेयर टू नॉट जस्ट स्टे बट मूविंग फॉरवर्ड ये चीज़ें उसी तरीके से यूटिलाइज होंगी. वो शायद थोड़ा सा वही एक एडजस्टमेंट पीरियड होगा कि जहाँ पे थोड़ी सी रीशफलिंग होगी. आई हैव अ फ्रेंड, he was talking about he's a photographer, so he says कि I sometimes have to edit 200 pictures for a client.
So he said, now if I get to, edit those in couple of hours, अगर मैं 2 घंटे में अपना काम, तो जो मैं 15 दिन में करता था, I have more time for myself or my family. But then he said, if I want to utilize, तो then, there are other tasks in my business कि जो अब मैं कर सकता हूँ. तो वो शायद वही बात है कि अगर वो ऑटोमेशन है या वो AI की चीज़ें हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. they're improving life. Definitely, it's कुछ लोगों को है थोड़ा सा, डिज़ाइनर्स भी इन जनरल, बाकी डोमेन्स भी, they're feeling a bit scared, but शायद वो एडजस्टमेंट पीरियड है, उसके बाद थोड़ा सा लोग. आई थिंक इसमें एक चीज़ जो आती है वो ये होती है कि व्हेन यू एक्वायर अ सर्टेन स्किल ना एज ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, तो आप वो बड़ी अफिनिटी उसके साथ फील करते हो कि अच्छा यार ये मैंने एक बड़ी एफर्ट के बाद एक चीज़ लर्न की है. सो यू टेंड टू ना एक एटीट्यूड ये बिल्ड हो जाता है कि यू टेंड टू डिफेंड इट कि नहीं यार ये इसकी तो ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो रिडंडेंट भी हो चुकी भी हो, ठीक है ना. यू टेंड टू सॉर्ट ऑफ आप अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए ना, एक ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आप आर्ग्यूमेंट शुरू कर दो, सही है. ठीक है. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए चुप करके अपनी स्किल को जो है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वायरिंग अ न्यू स्किल बट जस्ट बिल्डिंग अप ऑन दैट स्किल. अपस्किलिंग करें आप सिर्फ. अपस्किलिंग करें, दैट्स इट, ठीक है. सो दैट इज द अप्रोच दैट वी शुड हैव, एंड आई थिंक it's very positive because I see a lot of people around me जो कि who have no issues adapting to skills. सही है. So ये that's a good thing that I see is कि हमारे especially in Pakistani people, I feel that we are hard working, but हम लोग जो है ना, क्योंकि इधर हमारे लिए हर रोज ही एक different challenge होता है based on के how our country is at the moment, ठीक है. हमारे लिए हर रोज ही एक different challenge होता है. तो आई थिंक वो उस लिहाज से ना हम लोग आई गेस हमें वी माइट एक्चुअली हैव एन एज ओवर एवरीबॉडी एल्स बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है. हमारे में एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सही. हमें इधर कोई थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा मुंह आगे कर देते हैं कि चलो इधर ही मार दो, तो फिर हम आगे चले जाते हैं. सो I have a friend, he has a really funny take on this. He said कि अच्छा AI अगर मेरी जॉब लेगा तो फिर मैं किसी और की जॉब ले लूँगा. तो he was like, because चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, चीज़ें तो इवॉल्व हो रही हैं, तो वो उस सेंस में उस तरीके से वो हो सकता है. Bilal, I think there is another thing which I wanted to ask you about कि you've been doing some personal projects as well. आपके जब भी businesses चलते रहे हैं, आपकी जब भी practice चलती रही है, I remember once you shared a project with me where you were creating products as well for some online platform. तो मुझे personal projects की relevance और उसके benefits का बताएं कि वो क्या है और कितना क्या benefit है, उसका कोई है भी कि नहीं, या सिर्फ वो दिल के. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है. पर्सनल प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल्दो एंड यू माइट एक्चुअली बी सरप्राइज्ड कि अभी जिस किस्म का हम काम कर रहे हैं एंड द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दैट इज रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट इज इन्वॉल्व, राइट, बट स्टिल यू स्टिल नीड स्पेस फॉर योरसेल्फ. सही. ठीक है. बिकॉज आप किसी भी चीज़ को अगर आप रेपिटेटिवली करते रहो ना तो उसका चार्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता, ठीक है. हाँ. सो पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको सर्टनली इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो आप कुछ चीज़ें डिफरेंटली करना चाह रहे थे, सही है, ठीक है, कुछ जो आप अपने आप को चैलेंज करना चाह रहे थे, जो आप पहले जिस तरीके से सोच रहे थे आज आप चाह रहे हो कि नहीं यार आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, ठीक है. बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो आप कहते हैं ना क्रिएटर ब्लॉक जो होता है या क्रिएटिव ब्लॉक जो होता है आपका, या आप एज डिज़ाइनर not only when you're working on specific projects but on when you zoom out as well, आप टनल विजन में चले जाते हो. सही है, ठीक है. whether it's just the difference is कि यार वो टनल छोटा है इधर प्रोजेक्ट्स के अंदर और वो टनल बड़ा है even when you're zooming out. सही है. so sometimes जो आप वो zoom out करके bigger picture भी देख रहे होते हैं ना, उसको भी you need to challenge that. सही है, ठीक है. because as leader of a company there is nobody else to challenge you. सही है, ठीक है. अगर आपके सामने कोई और बंदा आके आपको नहीं बोलेगा कि सर ये हम गलत कर रहे हैं, दिस कुड बी बेटर, या हमारी अप्रोच, या फिर आप ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एक लैंडस्केप को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि वो हर एक के अंदर चीज़ आती है कि यू गेट अटैच टू योर प्रोडक्ट व्हाट यू बिल्डिंग, ठीक है. सो हु इज गोना चैलेंज दैट, बिकॉज द ओनली टाइम दैट विल गेट चैलेंज्ड इज वंस द प्रोडक्ट इज आउट देयर इन द मार्केट एंड यू रियलाइज देन दैट कि यार इट्स डेटेड, ठीक है. This is how fast technology is going right now. So you need that time to sort of zoom out and do certain activities. It could be, engage in different activities. For me,
I tend to engage in design activities. Okay. ठीक है, I take part in challenges. ठीक है, so that gives me that room to think differently. And fresh eyes. Fresh eyes. So उसका फ़ायदा ये होता है कि not only that particular project या जो particular challenge जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ, अब मैं सिर्फ उसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन at the end of the day मैंने अपने आप को चैलेंज किया है. Now that sort of practice allows you to critically think about things, even your own decisions. बिल्कुल सही है. ठीक है. बिल्कुल सही. So it is important. We might not see the connection straight away, but there is a big connection because taking criticism, ठीक है, and realizing कि यार हाँ जो अगला बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है. But yeah, a lot of times people are just saying it for the sake of saying it, right? So you don't have to take up every single advice, but you have to challenge yourself कि अच्छा यार हाँ maybe ये जो कुछ पत्थर आ रहे हैं ये शीशे पे लगेंगे तो शीशा टूट भी सकता है. ठीक है. और इसमें मैं अगर एक चीज़ और ऐड करूँ कि बिलाल शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि यू प्रॉब्ली ऑल्सो सीन अर्ली करियर डिज़ाइनर्स या प्रोफेशनल they sometimes struggles with their work environment, their their satisfaction with the job they have, or even their businesses. But शायद ये personal projects अगर इस तरह के लोग साथ साथ करते रहते हैं तो वो जो वर्क का स्ट्रेस है, या अगर आप पैशनेट भी थे अपनी जॉब या बिजनेस के बारे में, जब आप उसको सीरियसली लेकर चलते हैं तो दैट ऑल्सो बिकम्स मंडेन. पैशन वंस इट बिकम्स मंडेन, इट कुड बी अगेन थोड़ा सा टफ हो सकता है. बट इफ़ यू डूइंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स, चाहे आप क्रिएटिव हैं, डिज़ाइनर हैं या इंजीनियर हैं या कोई और हैं, तो शायद वो आपकी पर्सनल ग्रोथ पैरेलल किसी और चीज़ में चलती रहती है. एंड मे बी एट लेटर स्टेज you can connect it with whatever you are doing and sort of refurbish it and Absolutely. And actually that personal project don't necessarily need to be as per your work. It could be कि यार आप कहो कि challenge yourself and you start learning cooking, हाँ for example. बिल्कुल ऐसे. If that suits you, then that's good. In fact, I quite मैं काफ़ी दफ़ा सोच चुका हूँ इसके ऊपर, यार कुकिंग करनी चाहिए, मज़ेदार काम है बड़ा. बट उस पर मेरा वो जो है ना वो थोड़ा सा क्रिएटिव साइड हावी आ जाती है. इन दैट सेंस मैं उन्हीं चीज़ों में लग जाता हूँ अपने एक्स्ट्रा टाइम में भी. बट या अगेन दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट आई पर्सनली फील कि मुझे उस पर भी अपने आप को चैलेंज करना है कि जी यार उठो, कंप्यूटर से भी हटो थोड़ा सा बाहर और चैलेंज योरसेल्फ विद समथिंग एल्स. Yes. Since you're sharing, I also share कि I've been thinking कि I should go bird watching. मैं जाके देखूँ कि birds कैसे होते हैं या वो क्या different types हैं, how they're living. So maybe again, not for the sake of work, but have a different sort of a hobby and refresh my eyes. I had a great time, Bilal. Thank you so much for coming in and educating us on what's happening in AR and VR and how those technologies work, and then also your perspective about how things would be in coming days. Thank you so much for inviting me, and it's been a pleasure. And the whole place, the whole setup is all very amazing as well. And all the best to you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.